Good morning students. I am Kavita Monga, lecturer physics from Government Polytechnic College Khuni Majra. Today we will study about surface tension. The topics which we will cover today are surface tension, its causes, its examples, its applications, factors affecting surface tension, adhesive forces, cohesive forces, formation of meniscus, capillary action, examples of capillary action, ascent formula, and finally determination of surface tension by capillary rise method. So all these topics we will cover today. So just see at this picture, how is this possible? How an insect can walk on a water? Why certain insect can walk on a water? So ये insect पानी के ऊपर क्यों चल पा रहा है? Because the surface of water behaves almost as if it had an elastic skin. So ये जो water surface है वो उसके लिए एक elastic skin की तरह behave कर रही है. So this behavior is due to an imbalance of intermolecular forces at the surface of water. So ये क्योंकि जो intermolecular forces हैं वो imbalance हो रही हैं. So यही आज हम find out करेंगे कि why certain insects can walk on a water, and the answer is because of surface tension. So before starting with surface tension, we will study few definitions. So सबसे पहले what are molecular forces? The forces of attraction or repulsion existing between the molecules of various substances are called molecular forces. कोई substance है, say for example water है, उसके different molecules में जो अट्रैक्टिव और या रिपल्सिव फोर्सेस हैं उनको हम मॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं. नेक्स्ट, फोर्स ऑफ कोहेशन क्या होती है? इट इज़ ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ सेम सब्सटेंस. सो सेम सब्सटेंस मीन्स जैसे अगर वाटर है या मिल्क है, उसके जो मॉलिक्यूल्स की आपस में अट्रैक्टिव फोर्सेस, से आयरन है, जैसे आयरन के मॉलिक्यूल्स की आपस में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उनको हम फोर्स ऑफ कोहेशन या कोहेसिव फोर्सेस कहते हैं. देन फोर्स ऑफ एडेशन क्या होती है? इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ टू डिसिमिलर सब्सटेंस. सो दो अलग अलग सब्सटेंस के बीच में जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं अट्रैक्टिव, फॉर एग्जांपल ग्लास एंड वाटर. ग्लास और वाटर के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उनको हम एडेसिव फोर्सेस कहते हैं या फोर्स ऑफ एडेशन. Now next, what is molecular range? Molecular range किसे कहते हैं? The maximum distance up to which a molecule can exert force of attraction on another molecule is called molecular range. So what is molecular range? कोई एक molecule कितनी दूर तक दूसरे molecules पे force exert कर सकता है. So the maximum distance up to which a molecule can exert force of attraction on another molecule is called molecular range. Next, what is sphere of influence? Sphere. So it is a sphere drawn around a particular molecule as the center and molecular range as the radius. So किसी एक molecule को center पे रख के molecular range को radius मान के जो आप sphere draw करोगे, that sphere is called sphere of influence. Now what is surface film? Surface film किसको कहते हैं? The topmost layer of a liquid. Liquid की topmost layer having thickness equal to the molecular range. So topmost layer liquid की जिसकी thickness molecular range के बराबर हो, that is called surface film. So now after these definitions, now we can understand what is surface tension. So let us define what is surface tension. So surface tension is a phenomena in which the surface of a liquid where the liquid is in contact with gas
acts like a thin elastic sheet. So surface tension वो phenomena है in which the surface of liquid का वो surface which is in contact with gas, it acts like a thin elastic sheet. So this term is typically used only when the liquid surface is in contact with gas such as air. If the surface is between two liquids, अगर हम दो liquids के बीच के surface की बात करते हैं, example water and oil, then this surface is called interface tension. तो उस केस में हम उसको simply surface tension नहीं interface tension कहते हैं. So surface tension word is associated when one surface is that of gas, when the surface of liquid is in contact with gas. Surface tension is measured as the energy required to increase the surface area of a liquid by a unit area. So just see here what is surface tension, how it is measured. It is measured as the energy required to increase the surface area of a liquid by a unit of area. The surface tension of a liquid results from an imbalance of intermolecular attractive forces, the cohesive forces between molecule. So ये surface tension क्यों होती है? This is due to imbalance of intermolecular forces. So अभी आगे हम देखेंगे कि how this happens, ये कैसे होता है imbalance. So the cohesive forces between the molecule, ये इनकी imbalance की वजह से surface tension का phenomena होता है. So a microscopic view of water illustrates the difference between molecules at the surface of a liquid and water molecules within a liquid. So अभी next slide में हम देखेंगे कि जो water molecules surface पे हैं और जो water के बीच में हैं उनमें क्या difference है. So just see here in this diagram, a molecule in the bulk liquid, जो ये एक molecule जो बहुत सारे liquid के बीच में है, it is inside. So this experience cohesive force with other molecules in all direction. So इसके ऊपर इसके चारों तरफ molecules हैं तो ये चारों तरफ से इस पे cohesive forces act करेंगी. So net resultant is zero. इसके ऊपर कोई imbalance नहीं हुआ because इसको चारों तरफ से forces it is experience cohesive forces. लेकिन जो surface पे होगा molecule, so a molecule at the surface of a liquid experience only net inward cohesive forces. So जो surface पे molecule है उसके ऊपर तो air है, so उसको जो cohesive force वो experience करेगा वो only downward ही होगी. So this is what we mean by imbalance of cohesive forces. So in this case इसको चारों तरफ से cohesive forces मिल रही हैं, लेकिन जो surface पे molecules हैं they are experiencing only net downward cohesive forces. So the unbalanced attraction of molecules at the surface of a liquid, so the unbalanced attraction of molecules at the surface of a liquid tends to pull the molecules back. So it tends to pull the molecule back, नीचे की ओर खींचता है into the bulk liquid, leaving the minimum number of molecules on the surface. So surface के ऊपर कम molecule होंगे, they are attracted downward because of imbalance of cohesive forces. It requires energy to increase the surface area of a liquid because a larger surface area contains more molecules in the unbalanced situation. So in this situation, energy is required to increase the surface area. The molecules at the surface of this sample of liquid water are not surrounded by other water molecules. So जो surface पे water molecules हैं, they are not surrounded by other water molecules. The molecules inside the sample are surrounded by other molecules. जो बीच में हैं, they are surrounded by other molecules. So next, what are causes of surface tension? Surface tension क्यों हो रहा है? Various intermolecular forces
such as van der Waals forces draw the liquid particles together. पार्टिकल्स को इकट्ठे बाइंड करती हैं ये फोर्सेस, वैन डर वाल फोर्सेस. Along the surface, the particles are pulled towards the rest of the liquid as shown in the picture. Surface tension denoted with the Greek variable gamma. So surface tension का जो symbol होता है, या तो हम उसे कैपिटल T से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या हम उसे गामा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो मैथमेटिकली न्यूमेरिकली अगर आपको सरफेस टेंशन फाइंड आउट करना है तो सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ surface force F to the length D along which the force act. So this surface tension, either you can represent it by gamma or by T. This is given as force upon distance. So mathematically or numerically, if you have to calculate surface tension, the formula is force upon distance. So now next let's study what are van der Waals forces. हमने previous slide में देखा कि surface tension, this is due to imbalance of forces, so imbalance of van der Waals forces. So van der Waals forces are small attractive forces caused by the movement of charges inside a molecule. Within a liquid, molecules are attracted to each other from all directions. Therefore, a molecule will not experience a net force because they will all cancel out. So जैसे previous slide में हमने देखा पिक्चर में कि एक मॉलिक्यूल पे चारों तरफ से अगर फोर्सेस एक्ट कर रही हैं तो net resultant will be zero. So therefore the net force is zero because they will cancel all. एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, so net force will be zero. और सरफेस पे क्या होता है? ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर पुल टू ईच अदर टू ईच साइड एंड इनवर्ड बाय नेबरिंग मॉलिक्यूल्स. अब इसमें जो सरफेस पे है नीचे मॉलिक्यूल है, ऊपर तो है नहीं, ऊपर तो एयर है, सो दे आर पुल्ड डाउनवर्ड और इनवर्ड. देयरफॉर देयर विल बी अ नेट इनवर्ड फोर्स बिकॉज देयर आर नो फोर्सेस एक्टिंग ऑन द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अबव. क्योंकि ऊपर फोर्स नहीं है, ओनली नीचे ही है, सो there is net inward force. This net inward force causes the molecules on the surface to contract and to resist being stretched or broken. So this net inward force causes the molecules on the surface to contract and to resist being stretched or broken. So just see now this figure. ये जो molecule है, this is inside the liquid, पानी के बीच में है, so it experience force from all direction. So net force जो है resultant वो ज़ीरो है. लेकिन यहाँ पे जो surface के ऊपर water का molecule है, ये सिर्फ इसको inward नीचे की तरफ force है, ऊपर तो air के molecules हैं. So the result is there is net inward force. So the strength of the attraction between particles can greatly affect the properties of the substance or solution. So अब ये जो strength है उसकी force की, जो inward net हमने देखा resultant force है, so it can affect the properties of a substance. So intermolecular forces affect many physical properties. So जो surface में molecules होंगे they will exhibit some different type of properties. जो बीच में molecules होंगे चारों तरफ से फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, सो द नेट रिजल्टेंट फोर्स इज ज़ीरो हेयर. सो जस्ट सी नाउ, ये मॉलिक्यूल जो है सरफेस के ऊपर दिखाए गए हैं, ये वाले जो इंटीरियर बीच में हैं. सो टू क्रिएट मोर सरफेस द मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर. एंड इसको करने के लिए क्या चाहिए? टू सेपरेट द मॉलिक्यूल्स रिक्वायर दैट वर्क बी डन. So surface tension must be overcome. So इसको accomplish करने के लिए work has to be done. Surface tension results from the net inward force experienced by the molecules on the surface of a liquid. So net force experienced by a molecule on the surface, this is the cause of surface tension. Bulk molecules are equally attracted to their neighbors. Bulk molecules are equally attracted to their neighbors. Surface molecules are only attracted inward toward the bulk molecules.
thereby reducing the surface area and make molecules at the surface pack closely together. So thereby reducing the surface area. This causes the liquid as if it has a skin. So this is the reason that the surface, it behaves like a elastic membrane, or we say that liquid has a skin. Surface tension is the amount of energy required to increase the surface area of a liquid by a unit amount. Stronger intermolecular forces cause higher surface tension. अगर intermolecular forces strong होंगी तो जो surface tension है उसकी value ज़्यादा होगी. So surface tension depends upon intermolecular forces. Stronger intermolecular forces, higher surface tension. So water has a high surface tension because of hydrogen bonding. Water का surface tension ज़्यादा क्यों होता है? Because of hydrogen bonding. और mercury has a even higher surface tension because of strong metallic bonds between atom. So water में hydrogen bonding है और mercury में metallic bonds है. So mercury की जो है surface tension water से भी ज़्यादा होगी. It is 0.46 joule per meter square और water की it is 0.07 joule per meter square. Now let's summarize. Surface tension is a property of liquid that results from the tendency of liquids to minimize their surface area. So surface tension results because of tendency of liquids to minimize their surface area. In order to minimize their surface area, liquids form drops that are spherical as long as there is no gravity. So एक बहुत important point है यहाँ पे कि liquid drops हैं वो हमेशा spherical ही क्यों होते हैं? The answer is no doubt this is due to surface tension. But why surface tension? और spherical shape ही क्यों होती है इसकी? Because the sphere it has minimum surface area for a given volume. अगर एक गिवन वॉल्यूम के लिए आप डिफरेंट शेप्स कंसिडर करते हो, एग्जांपल आपने सिलेंड्रिकल शेप ली या स्फेरिकल ली या कोनिकल शेप ली, तो स्फेरिकल शेप का सरफेस एरिया मिनिमम है. सो इन ऑर्डर टू मिनिमाइज देयर सरफेस एरिया लिक्विड्स फॉर्म ड्रॉप्स दैट आर स्फेरिकल. सो अगर कोई क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाता है कि वाई द लिक्विड ड्रॉप्स आर स्फेरिकल, तो उसका ये आंसर है दिस इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन. In order to minimize their surface area, liquids form drops that are spherical as long as there is no gravity. अगर gravitational force ज़्यादा हो जाएगी surface tension से तो वो जो spherical shape है वो disturb हो जाएगी. The layer of molecules on the surface behaves differently from the interior. जो surface के ऊपर molecule है उनका behavior अलग है, जो interior में molecules हैं उनका behavior अलग है. Because the cohesive forces on the surface molecules have a net pull into the liquid interior, the surface layer acts like an elastic skin. So it behaves like a thin elastic membrane. So now let's visualize what is happening. अब हम ये देखेंगे, हम इसको close ला के देखेंगे कि water के surface के ऊपर क्या हो रहा है. Now just see what's going on at the surface of liquid. Liquid के surface के ऊपर क्या हो रहा है? Let's look, take a look. ये पास आ रहा है माइक, हम इसको enlarge करके देख रहे हैं surface को. Molecules दिखने शुरू हो गए water के या liquid के. So size और हम उसको close up देख रहे हैं और बड़े हो गए. So particles that make up a liquid are in constant random motion. They are randomly arranged. So particles in liquid motion में है and they are randomly arranged. You might expect the particles at the surface at the micro level to form a random surface as shown below. So हम इसका microscopic view देख रहे हैं, जैसे हमने यहाँ large कर करके देखा उसको, तो हम ये इमेजिन करते हैं कि ये जो टॉप सरफेस होगा बिकॉज पार्टिकल्स दे आर इन रैंडम मोशन, तो ये भी रैंडम होगा. सो दिस सरफेस इज ऑल्सो इट हैज़ रैंडम सरफेस.
बट हाउ डू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन्फ्लुएंस द सरफेस? अब जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो सरफेस को जो रैंडम होना चाहिए था कैसे इन्फ्लुएंस कर रही हैं? जस्ट सी हियर, ये बल्क वाले मॉलिक्यूल्स जो अंदर हैं, इनसाइड हैं, इनको चारों तरफ से इक्वल फोर्सेस हम पहले भी देख चुके हैं. द नेट रिजल्टेंट फोर्स ऑन दीज मॉलिक्यूल इज 0. So under the surface, intermolecular attractions pull on individual molecules in all direction. So चारों तरफ से सेम फोर्स है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है सरफेस के ऊपर? At the surface, pull on the molecule is laterally and downward. There is negligible intermolecular attraction above the molecule. ऊपर कोई अट्रैक्शन नहीं है, यहाँ दूसरा मीडियम एयर है. So the net force on surface molecule is downward. So net force here is downward. The result of this downward force is that surface particles are pulled down until counterbalanced by the compression resistance of the liquid. So ये जो net force है ये क्या कर रही है? ये molecules को it is pulling downward, इसको नीचे की तरफ pull कर रही है. So उसकी वजह से क्या होगा? अब ये जो random surface था ये random नहीं रहेगा. So surface molecules are compressed more tightly together, forming a sort of skin on the surface with less distance between them compared to the molecules below. So यहाँ पे इनका अपना distance भी कम हो गया as compared to जो बीच में नीचे molecules हैं. So they have compressed tightly together और उनका बीच का distance भी कम हो गया है. That means जो surface random होना चाहिए था अब वो random नहीं रहा. So it is forming a sort of skin on the surface. So surface molecules also form a much smoother surface than one would expect from randomly moving molecules. So that is why this behaves like a thin elastic membrane. So next see here. So force inwards है. तो ये अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि why the liquid drop is always spherical in shape. ये हमेशा spherical क्यों होता है? हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं because of surface tension and it has tendency to acquire minimum surface area और minimum surface area sphere का होता है. So this explains the characteristic rounding shape that liquids form when dropping through the air. The molecules are all being pulled toward the center. So सारी molecules they are being pulled toward the center. So why a liquid drop has spherical shape? So this explains the characteristic rounded shape that liquids form when dropping through the air. The molecules are all being pulled toward the center. So molecules are all being pulled toward the center. So why liquid drop is always spherical in shape? This is due to surface tension. So water is particular, water की surface tension ज़्यादा होती है. So what property does water have that would give it such a strong surface tension? So next, calculating surface tension. अब हमने अगर surface tension निकालनी है तो we need a formula. हमें हमारे पास एक formula होना चाहिए. So surface tension denoted with Greek variable gamma is defined as the ratio of the surface force F to the length d along which the forces act. So gamma or T, its symbol can be capital T. This is equal to force upon distance. Units क्या होंगे surface tension के next? Surface tension is measured in SI units of Newton upon meter. So हमने देखा force upon distance है surface tension. Force upon distance. Force के unit हो गए Newton SI में और distance के हो गए meter. So Newton per meter. Although the more common unit in CGS unit में dyne per centimeter हो गए. Force के dyne और length के centimeter. So in order to consider the thermodynamics of the situation, it is sometimes useful to consider it in terms of work per unit area. So force per unit length we can also write it as work per unit area. So अगर हम surface tension को work per unit area माने तो इसके जो units SI system में हो जाएंगे joule upon meter square, joule per meter square
और CGS सिस्टम में इसके यूनिट्स हो जाएंगे अर्ग अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर. So force upon distance can also be written as work per unit area. So these forces bind the surface particles together. Though this binding is weak, it's pretty easy to break the surface of a liquid. After all, it does manifest in many ways. So now next हम जो करेंगे we start with examples of surface tension. So surface tension के हमारे day to day life में हमने बहुत सारे examples देखे हैं. सबसे पहले आ गया ड्रॉप्स ऑफ वाटर. सो पानी जो है स्फेरिकल शेप में ही क्यों होता है, हमने अभी डिस्कस किया. दिस इज ड्यू टू सरफेस टेंशन. सो व्हेन यूजिंग अ वाटर ड्रॉपर द वाटर डज नॉट फ्लो इन अ कॉन्टीन्यूअस स्ट्रीम. सो पानी कॉन्टीन्यूअस स्ट्रीम में नहीं फ्लो करेगा बट रादर इन अ सीरीज ऑफ ड्रॉप्स गिरेंगे. द शेप ऑफ ड्रॉप्स इज कॉज्ड बाय द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर. The only reason the drop of water isn't completely spherical is because of the force of gravity pulling down on it. In the absence of gravity, the drop would minimize the surface area in order to minimize tension, which would result in perfectly spherical shape. So already हम इस पे बात कर चुके हैं कि minimum surface area spherical shape का ही होता है. So that's why drops they are spherical in shape. So next example of surface tension is a needle or a paper clip floating on water. Paper clip या एक needle it can float on water. Why it can float on water? Because this water surface it has surface tension and it behaves like a thin elastic membrane. So even though the density of these objects are greater than water, इनकी density water से ज़्यादा है, the surface tension along the depression is enough to counteract the force of gravity pulling down on the metal objects. So in this diagram we can see how this pin and this paper clip they are floating on water. So the reason is the surface tension is enough to counteract the force of gravity pulling down on the metal objects. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इंसेक्ट्स वॉकिंग ऑन वाटर. एक इंसेक्ट जो है वो पानी के ऊपर चल रहा है. वाई? सेवरल इंसेक्ट्स आर एबल टू वॉक ऑन वाटर सच एज द वाटर स्ट्राइडर. देयर लेग्स आर फॉर्म्ड टू डिस्ट्रीब्यूट देयर वेट causing the surface of the liquid to become depressed, minimizing the potential energy to create a balance of forces so that the strider can move across the surface of the water without breaking through the surface. This is similar in concept to wearing snowshoes to walk across deep snow drifts without your feet sinking. So a water strider it can walk on water. This is the water strider insect. So next example of surface tension is dew drops. So ये ओस की जो बूंदे हैं dew drops. Have you noticed that the drops of water on the leaves in your garden in the early morning? The moisture in the atmosphere condenses in the early morning and beads on the leaves due to the surface tension. The surface tension gives spherical shape to the water drops. So next is beading of water on the wax car. अब अगर कार के ऊपर अच्छे से वैक्स लगा दी जाए तो पानी उसके ऊपर it will be in the form of beads. So waxing changes the surface properties of your car. So कार की surface property waxing change कर देता है, पानी उस पर टिकेगा नहीं. So when the rain drops fall on your waxed car, they smoothly slide down to the ground, keeping your car neat and clean and untouched. Water tends to adhere weakly to the wax and strongly to itself. नेक्स्ट इज मर्करी यूज्ड इन द थर्मोमीटर. थर्मोमीटर में मर्करी होता है. अब अगर मर्करी स्टिक हो जाए थर्मोमीटर की वॉल्स के साथ तो हमें करेक्ट रीडिंग नहीं देगा. सो द मर्करी यूज्ड इन द थर्मोमीटर डज नॉट स्टिक टू द वॉल ऑफ द कैपिलरी ट्यूब बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन. Had it stuck to the walls, the measurement of temperature would not have been correct. So ये surface tension की वजह से उसको stick नहीं करता. अगर कर जाता तो हम temperature की accurate readings ना ले पाते. So next example is separation of oil and water.
The separation of oil and water is caused due to the difference in surface tension of the two liquids. So naturally oil और water दोनों की surface tension अलग होगी. So there is also separation of the fuel and lubricating oil in the engine due to their surface tension. Had they mixed together, the fuel would have lost its combustion properties, while lubricating oil would have lost its viscosity and lubrication properties. So अगर ये surface tension ना होती तो ये आपस में mix हो जाते. So ऐसा नहीं होता है. So this is all because of difference in their surface tension. So another example of surface